Meanwhile, I'll start with you. Can you just brief the students what is GATE examination for food technology students basically? What is the difference between GATE XC, Excel, and what is the marking scheme for the exam? Yeah, okay. Hello everyone. Myself, Ankita Patil. I'm pursuing MTech in Food Technology from ICT Mumbai. Basically, firstly, what I want to clear is regarding GATE XC and Excel. See, because many of us are always confused, like what to choose, what is the difference between XC and Excel, and there are so many questions regarding that in your mind. So the first thing is basically XC is related to your engineering sciences and Excel is related to your life sciences. Now you will have many subjects over there, and food technology will be one of the optional subjects. So if we go for the XC, so in XC, in engineering sciences, maths will be your compulsory subject. General aptitude is also mandatory. Then you will have other subjects to choose from, like thermodynamics, fluid mechanics, and food technology. So you have to choose two subjects from all these. So as we are from the food technology background, so we go with the food technology, and rest of the part is like it depends on your interest or basically what you are capable of, like what concepts more clear you guys have. So basically whether it can be the fluid mechanics or either it can be thermodynamics. Next is regarding the Excel. So in life sciences, basically your chemistry will be the mandatory subject. Like as in Excel you have mathematics, so in life sciences you will have chemistry. Then general aptitude is there in all the GATE papers. General aptitude is mandatory and it is same for all the papers. Then from the optional subject, you will have subjects like microbiology, biochemistry, zoology, botany, and food technology. So food technology for XC and Excel, both the section food technology is same. There is no change. Okay, you in food technology you will have food chemistry, food microbiology, food product technology, and food engineering. So in food engineering you will have the numericals. Like in your BTech syllabus, you will have probably some numericals in food engineering section. So likewise, little bit difficult, little bit of different numericals you will have in your food engineering, in your food technology section of GATE. Then the very important thing is, for example, if you choose XC, so people get confused whether to go with fluid mechanics or thermodynamics. Okay, so those who are mentors from XC can explain you this very, like they can explain you this at the best. What to choose. I am the mentor of my food life sciences, so I can tell you in life sciences if you have confusion between what to choose. Like basically life science people mostly they go with the microbiology or either they will go with the biochemistry to choose as an optional subject because chemistry is mandatory. So what I will suggest is see in biochemistry basically what you will have. For example, you have the topic protein. So protein, we just briefly know what is protein. But now if you have to study that protein in the biochemistry way, okay. So what you have to do is suppose you have the pKa value, how to find out that? Okay. Then you have some numericals based on the protein. So we are like, are there really any numerical which can come from the protein? We guys are not aware of that. So biochemistry is that much deep. Okay, it is not like carbohydrate protein बस ये सब पढ़ना है and we are like हाँ हो गया बायोकेमिस्ट्री चाहिए तो चलो बायोकेम चूज कर लेते नो that is in depth. You have to study it thoroughly. Okay. Next is regarding the microbiology. Now in microbiology, it is not only food microbiology, like names of the bacteria, spoilage causing agent, and yes, no. In microbiology, you have to start from your like gram staining, basics of microbiology, morphology of your bacteria, viruses. Okay. Now this much part we have studied till our 12th standard. But we haven't studied immunology. Like for example, you have the hepatitis B virus. Okay. Like what is the which virus is responsible for hepatitis B? Which virus is responsible? Like HIV is occurring. So what is the solution or which vaccine you can take? Or for example, you have the chicken pox, or there are many other diseases like rabies is there. So you have to study all these diseases thoroughly in microbiology. So it is not only related to the just कि food में spoilage होने के लिए ये microorganism responsible है और पढ़ ली microbiology. No. So it totally depends on your point of interest. In biochemistry, your chemistry should be more clear. Okay, then you can choose biochemistry. कि अगर आपको आ रहा है, सपोज मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए, प्रोटीन की पीके वैल्यू वगैरह निकालनी है, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस you know, so you can choose biochemistry. If you are interested in that, then also you can choose because we are going to teach you what exactly will be there in your exam. The next is in microbiology. If you guys are more interested in immunology,
in the structure of microbes, in gram staining technique, in serial dilution, or in numericals regarding the microbial growth curve. You will have the lag phase, log phase, or for example, at 8 a.m. in the morning, you have this 10 to the power 6 microbes, and at 11 a.m., what will be your microbial count if the growth rate is they have given XYZ. So if you are very much interested or if you have eager to learn these things, you can choose microbiology. Okay, this is the very important thing. Before starting preparation, you should be clear with your points. Yes, I'm interested in this. That's why I will go with Excel, or either I will go with Excel. The second important thing which I will like to share is it is like if whenever you are starting preparation, now just make a timetable, rough timetable. It is not like 8 to 10 a.m. I will do this, 10 to 11 this. Not that. Just rough structure. As we provide you the yearly planner. Likewise, just make your own planner. In first 3 months you have to study this. After next 3 months you have to practice questions, and at the end you have to revise the thing. Likewise, do it accordingly. And after every session, after every lecture of every mentor, whatever lecture you are going to have, just do one thing, that just make it mandatory in your list. After that session, till whenever you are going to sleep, before that, just glance that notes, whatever running notes you have made, just glance it once. It is very important, because what happened, mentors are giving their best to teach you things, but it is like our is a human brain. We used to forget things. Okay, that is the human nature. There is like nothing different science behind that. So that's why whenever you glance it for the once, afterwards whenever you are going to start revising, it will be more easier for you to keep in mind कि yeah, सर ने तो ये ऐसे ऐसे बोला था इसके रिलेटेड. अच्छा ठीक है, वो नोट डाउन कर लिया, वो तो पढ़ा भी था. So it will be there in your mind whenever you are going to revise the things. So that will be more helpful. And the third point which I would like to add is do not skip classes, because afterwards it become habitual कि आज ये skip कर दिया, ठीक है, तो कल का भी skip करके recorded देख लेते. It is not like that. If you guys are that much interested in recording session, then why we have arranged live sessions? Now we would have done that. That will be more easier for coaching institute also. So the thing is in recorded session, that is more interactive. If you are not getting any point, you can just directly ask sir ये समझ में नहीं आ रहा, इतना repeat कर दो. But after recorded session, like whenever you are going to watch the recorded session, it won't be possible for you people. So like this is all for you. So I will just tell कि इसका 100% benefit ले लो. You guys are paying, so like be attentive in session and be like कि नहीं, मुझे तो एक target fix कर लो कि this is the rank which I have to achieve and I will get it at any cost, and just give your best. ठीक है, academics, I know what is the academics का इतना load नहीं होता. So I will just suggest कि this is for your future, so do it accordingly, work it accordingly. If you have any doubt, you can just ask any mentor over there, or Raju sir is always there to help students, so you can do things in that way. That's it from my side. Okay, thank you, Ankita. Summarizing your point, we can say that basically GATE exam is one of the gateways to prestigious institutions for MTech in various programs, whether it be food tech, whether it be different domains. And GATE XC and Excel, it depends on the person maybe. Maybe the student, if he or she has a background of maths, then he or she can go with XC, of course. Otherwise, it's better to go with Excel if you have some theoretical background, and if you are interested with microbiology or biochemistry sort of subjects, then it's good to go with GATE Excel. And now, Raju sir, I want to ask you, can you just brief what is the marking scheme for GATE examination, as well as what are the colleges that students can get after qualifying the exam? All right, thank you. And thank you for fellow mates, all the panel members, the students, Vidhi, Sonak, and Deep. Saptadis is older, and I mean, he has sort of experiences, and other fellow mates. Since before a couple of months, if I'll say they were students and now they are mentors. So, what makes difference is because experiences what we gain through the process of journey that we had, right? And this is how you are able to be a mentor. You are a student. So of course we are students always, and of course after a certain period of time, once we had enough number of experience, we become mentor. So coming to ma'am question, GATE XC Excel, like what we are focusing currently for food technology students like us, there are
three major type of questions is to come in the examination. Certainly there are others also as the following, but NAT, that is numerical aptitude, numerical integer type questions, and there is a MCQ, multiple choice question, and MSQ, multiple select question. What does it mean? NAT means we'll be having sort of numerical aptitude test, sort of the full form is, and in this we get numerical question, how we get get in mathematics, and how it goes in food engineering and sort of thermodynamics. Okay, now in MCQ we'll be getting 4 options and we'll have to choose one single correct basically, and sometimes it is MSQ. Among that we have a 4 options, and in that we may have to choose 3 options or 1 options or 2 options. It depends on the questions. Now marking scheme is, there are 2 types of question. One is of 1 marks, one is of 2 marks. So certain questions are there with the no negatives, certain questions with the minus 0.33, that is 1/3, and certain questions with the 2/3, that is minus 2/3 and 2 marks. So it's basically 0.66 marks. So this is how it happens. Then after that you get marks out of 100. Total marks is 100, and your score is valued under 100 marks. And after that you get gate score, and your examination, that is your admission, is based on the gate scores most of the times, because this is easy way to compare other branches as well. Okay, so I guess I answered your query, ma'am, and hope to take further questions. Yes. Just one more thing, sir. Can you just mention what all colleges can a student get after qualifying GATE exam, whether it be XC or Yeah, Excel? surely. So the major thing that I guess, like, every student whoever is trying to prepare, and I mean has a little bit knowledge of preparing for GATE examination. So you have certainly we have a confusion when we are in third years or fourth year in our colleges. We have a lot of confusion that what should we should either we should go for MBA or MTech. So I'll come to your answer question, ma'am. But before that, I just like to brief about that. So most of the times you have to be clear that either you are very good at managerial skills or you are good at technical, sort of food technology and science, and new product development or R&D sort of. And after that decision, then once you decide that, you'll have to focus that now what should rank or number that you should achieve, or should prepare for, so that you get your dream college. And when it comes to dream colleges, you have all the IITs, which is, so there are 2 types of colleges or branches that we get. One is interdisciplinary, and one we get is sort of our major branch. And what does it mean is like food process engineering or food science and technology, or food technology. In most of the colleges it is foods, let's see, although branches are different, but the most of the times is college also matters. Then we comes with the ICT colleges, ICT Mumbai, Jalna, and then Bhubaneswar. Then we have sort of NIFTEM Kundali, NIFTEM there Tanjore, although Tanjore doesn't take with this gate. Then we have Jadavpur University, CIT Kokrajhar, so up to, and NIT Rourkela, of course. So most of the colleges we have based off this your range, let it be get a score of 600 to 700. We have this NITs. So I guess you have to, once you decide that what is your purpose, to get a placement or sort of getting masters and then PhD, so you can choose among these colleges. Okay, thank you so much, sir. So briefly, if I would say about GATE exam, so GATE exam is into 2 parts: GATE XC or GATE Excel, particularly for food technology students. And a person or any student can select XC or Excel on the basis of his or her comfortability with the subjects that are offered, and what college he or she wants to target, whether he wants to go for placements, whether he wants to go into research, and what is the career objective of that person. And the marking scheme, as sir mentioned, is +1 or +2 and minus 0.03, minus 0.33 and minus 0.66 for the GATE examination. And there are 3 types of questions being asked. Now, I would like to ask questions from our student panel. First of all, I'll ask to Vidhi. Vidhi, can you just mention how was your preparation journey? What was your weak point? What was your good point? And entirely, how was your journey for GATE preparation?
Well, actually, Vidhi has recently qualified the GATE exam in 2024, and she has qualified for NIFTM. She would be joining the college very soon. Hello everyone, good evening. I'm Vidhi, and first of all, I would like to thank AgriVision because only because of their mentorship, I was able to crack GATE, and the minus points which I can observe was preparation time. I think we should complete our course and revise it once till December, and I lagged it till January end, and it ended as ki I I passed very few mock tests because I was not completed with my revision, so I was trying to cover my revision again and again, and I took very few mock tests. So we should complete at least 2 times revision till December. And academically बहुत pressure रहेगा, but daily consistency से पढ़ना बहुत जरूरी है. बैकलॉग डेली का बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एक दिन में 3-4 क्लासेस, वो भी 2 आवर्स की, और वो कभी कवर नहीं होती, कभी भी नहीं होती. तो वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, चाहे लेट नाइट तक देखना पड़े, बट करना पड़ेगा. तो सबसे बड़ा मिस्टेक यही था कि दिसंबर तक कोर्स पूरा नहीं हुआ था मेरा खुद के लेवल पे. ओके, ठीक है. थैंक यू विधि. मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लर्निंग ये होती है कि आपको टाइम रहते ये समझ में आ जाए कि कब कौन सी चीज कंप्लीट करनी है, और वो अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो मुझे लगता है कि टीचर से भी बेहतर परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इन द सेम रेस मैं सौनक से भी पूछूंगा, क्योंकि सौनक इज स्टूडेंट. आई मीन 2 साल बच्चे ने बहुत मेहनत करी है. 1 साल हमारे साथ, और ऑफकोर्स 1 साल जस्ट विद द गाइडेंस, क्योंकि उसने जो पेन था पूरा खुद से लिया. सब कुछ पहले से था ही, सब कुछ पढ़ा हुआ था और सब कुछ उसके पास था. उसने और टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट किया, वो भी बहुत लास्ट में. लेकिन उसने वो चीज बताई थी कि सर मेरे को सब कुछ पता है, जो मैंने मिस्टेक्स करी ही है बस उसको मुझे रेक्टिफाई करना है. एंड आई वाज इंस्पायर्ड. मैंने 2 या 3 बार पूरे साल में मुझे लगता है कि सौनक बात किया होगा. मैं सौनक से स्पेशली जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि कभी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार कब स्टार्ट करे, क्यों करे, वो पर्पस क्लियर नहीं होता, वो पेन नहीं लेना चाहते, वो आप अपने जर्नी से बताओ. और अपने फेलोमेट्स भी आप देखे हुए बहुत सारे लोगों को, आप हम में से बहुत सारे लोगों को जानते हो. वो चीज एक बार एक्सप्लेन करो कि जो बाकी लोग होते हैं जो अपने सिमिलर जर्नी से गुजर रहे होते हैं, उनको कैसे आप इंस्पायर करोगे ये सेम जर्नी के लिए, क्योंकि यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल दिस ईयर. और आपने वो देखा होगा, पीड़ा देखा होगा कि जब नहीं स्कोर कर पाते उतनी मेहनत करने के बाद में भी, और फिर से वो लगना है कि यार, और अनसर्टेनिटी होती है कि यार अभी फिर मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे पता नहीं है ना कि अभी 1 साल मेरा जाएगा नहीं जाएगा, बाकी सारी चीजें कैसे रहेगी. जस्ट फोकस ऑन दैट. सौनक. Good evening, everyone. So, hello, everyone. My name is Sonak, and I've qualified GATE in the Excel stream, as said by Raju sir, 2 times in 2023 and 2024 as well. So, as Raju sir said, that one positive thing that I want to mention is that I started my preparation well in advance. That's from the second year. So that's the main thing, or the main positive thing in my preparation. And also I had 2 seniors as well from my college, and also they have got their mentorship from AgriVision. So they were very helpful in giving me the recommendation to join this coaching and get into the best colleges for doing a post graduation. So yes, so they suggested me to get into this second year, because obviously the time is very short for everybody. Obviously there is the academic load for everyone. There are midterms, there are final exams, there are practicals. The preparation will get stuck at that time only. So I suggest everyone, or the future aspirants, start early from the second year, because you won't get much time in the final year. Now for my case, in the second year I joined the coaching. I did my classes, but somewhere I felt that I was not able to use the full potential of it. The resources were provided, there were test series, there were online classes, there were recorded lectures, but somehow I couldn't make it use to the full potential, just because my preparation got hampered because of that academic load. So when I gave the GATE examination, I just went in the third year.
So I just went in that it will serve me as a benchmark, means it will not get any worse than this. So I gave the GATE examination with this mindset, and I got a rank of around 3K in the third year. So that actually boosted my confidence that I can improve upon this. I can bring my rank more better. So after 3 months, after the GATE 2023 results were declared, I decided that I will start a self preparation because all the resources were provided. And also what I did this time was make a structured plan of my study. And also the academic load was also reduced because only there were some 2 or 3 courses at my college. So I got lot of time. I invested a lot of time in my self preparation. I revised the notes. I structured them all properly. I gave time, and that actually gave me the result in the fourth year. That's good. That's good, Sonak. So, अभी जब भी मैंने बताया सोनक ने कि कैसे कैसे he has taken that decisions and everything, और कैसे उसको मुझे लगता है कि किसी भी एग्जामिनेशन रिलेटेड भी दुनिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके या किसी कोचिंग को ज्वाइन करके और बहुत बड़े अगर भगवान भी आज आपने बोल दिया कि ये सब कुछ कर लो और हो जाएगा, जब तक कोई बंदा सामने से नहीं करता है इट्स इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ थिंग कि यार अपने एफर्ट नहीं लो और आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, हम लोग 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो मतलब बच्चे ऐसे शुरुआत में बोलते हैं कि सर मेरे को खूब इंस्पायर कर दो और मतलब एक बहुत एनर्जी आ गई है, 4 दिनों में ही मेरे को सब कुछ कर लूंगा, 3 महीने बाद टाटा फेस हो जाता है। तो वो कांस्टेंट बनाए रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड दैट सेम रो आई वुड लाइक टू आस्क नेक्स्ट टू आयुष विद हिज एक्सपीरियंसेस कि कैसा मतलब था, बिकॉज यू आर आल्सो कम विद अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज कॉल्ड NIT Rourkela, and they have already a very good famous branch of this food engineering. Basically it is a food engineering technology, if I'm not sure. I used to just clarify that, and also tell your journey that why did you decided to go for masters, why shouldn't you go for a job or sort of things, please. So, thank you Raju sir. Hello everyone, my name is Ayush Shah. तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा कि मैंने अपनी गेट की तैयारी अपने थर्ड ईयर में भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मेरी जो थर्ड ईयर में मिस्टेक्स थी वो ये थी कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। मैंने ऑलमोस्ट अराउंड अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट ही किया था, तो ये एक मिस्टेक थी थर्ड ईयर की मेरी। और फिर मैंने उस टाइम एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, तो क्योंकि मुझे उस टाइम इतना कुछ आइडिया भी नहीं था और ये सब आइडिया था भी नहीं कि एक्चुअली हमारे FP के लिए, FP मीन्स कि हमारे फूड इंजीनियरिंग के लिए भी कोई मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूट होते हैं, तो इसीलिए ये सब आइडियाज भी नहीं थे। इसीलिए थर्ड ईयर एक तरीके से थर्ड ईयर का अटेम्प्ट मेरा बेकार हो गया था। फिर मैंने अगले साल, जैसे कि अभी इस साल में अटेम्प्ट दिया था, तो फिर इस साल मैंने थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ NIT Rourkela में बहुत कम लोग होते हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, वो भी इंडिया में MTech के लिए। तो मैं मतलब कि वो सब चीज़ में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में एक अटेम्प्ट दे रखा था, थोड़ा सा उसका एक अपर हैंड था मेरे पास। तो अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज आप लोग को या फिर मैंने कौन कौन सा रिसोर्स फॉलो किया है। तो जैसे कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स एक मेरा ऑप्शनल था, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने जो भी डेली DPPs हमें मिलते थे, हम लोग उसको डेली के तौर पर उसको एकदम रेडी करते थे। लेकिन मैंने उसके साथ साथ एक अपना थर्मोडायनेमिक्स का एक बुक आता है PK नाग के नाम का, तो हम लोग उसको भी एक्चुअली मैं उसको बहुत एंड टू एंड एकदम अच्छे से करके रखा था। ये चीज हो गई थर्मोडायनेमिक्स की बात।
अब आते हैं सबसे मेजर इम्पोर्टेंट चीज पे, जो कि है मॉक टेस्ट। मेरा मेजर इम्पैक्ट, मेरा जो भी रैंक इम्प्रूवमेंट और मेरा जो एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो मॉक टेस्ट से ही हुआ है। तो मैंने थर्ड ईयर में एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन मतलब कि इस साल मैंने हर एक मॉक टेस्ट जो कि एग्री विजन से है, ऑलमोस्ट हर एक मॉक टेस्ट मैंने दे रखा है। और उससे एक ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ था कि मैं टाइमली देख सकता था कि मैं अपने रैंक में इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरा एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, और एग्जाम को देने के अटेम्प्ट वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सब चीज मेरी थर्ड ईयर की मिस्टेक्स थी, और मैंने उसे अपने फोर्थ ईयर में रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ एग्रीविजन। सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू अराज। सो थैंक यू सो मच आयुष। जैसा आपने बताया कि एक मेजर चीज होती है कि आज जो हमारा कल हो जाता है, आने वाला कल या पिछले वाला कल, पिछले वाला कल बहुत कुछ सिखा के जाता है, और पिछले वाले कल को अगर हम अगले वाले कल में जो लर्निंग हुई उसको अगर हम बस इम्प्लीमेंट कर ले तो हमारी जिंदगी हर दिन बेहतर हो जाती है। और आपने तो पूरी की पूरी एक साल की लर्निंग को ही पूरा एकदम उसको इनकलकेट किया और सारी चीजों को इम्प्लांट किया अपने अंदर। तो ऑफ कोर्स इट इज आई मीन इट्स बोन सॉर्ट ऑफ यू इम्प्लीमेंटेड एंड यू गॉट द रिजल्ट्स। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट हम लोग कितनी बार भी बता ले, बहुत सारे लोग नहीं करते। लास्ट दिन तक भी हम वेबिनार लेके बताते हैं कि पेपर ऐसे देना है, निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, और बहुत सारे लोग करके आते हैं, फिर बोलते हैं सर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ तो कसर छोड़ी होगी तो ही होता है। और हम जितने भी हमारे पास एग्रीविजन में CFTRI हो गया, गेट हो गया, NIN हो गया, ICR हो गया, CUT हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स की हम तैयारियां करवाते हैं, हम लोग का मेजर यही रहता है, हम सिखाते हैं कि यार बच्चे प्लीज निगेटिव मार्किंग मत करना और मॉक देके जाओ। और मुझे लगता है कि 20% लोग जो एडमिशन लेते हैं हमारे पास, 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग हर अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मॉक ही नहीं दे रहे। मतलब जो भी ये वीडियो सुन रहा होगा बाद में, मैं आई जस्ट हैव रिक्वेस्ट, वेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट कि यार आप पढ़ लो, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लो, उस चैप्टर का एक क्विज दे लो, आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे हो। लोगों को ये लगता है कि यार मैं सिलेबस खत्म कर लूंगा ना, आई गेट इट डन एवरीथिंग, मैं एक गोल में सारा पेपर निकाल लूंगा और मेरे को पहला एग्जाम, मुझे आई रिमेम्बर जब मैंने अपना दिया था उस टाइम नहीं हुआ करता था। जब एग्रीविजन ने मैंने स्टार्ट किया तो एग्रीविजन से पहले कुछ था भी नहीं। तो मतलब आप लोग सोचो कि कोई नीड रही होगी, एंड आई स्टार्टेड दिस पीके नाग, एज आई यूज्ड टोल्ड दैट कि अच्छे कॉलेज में पीके नाग वगैरह अवेलेबल होती है और हमारे सीनियर से पता लग जाता है। मुझे तो ये भी नहीं पता है बुक्स कौन सा रेफर करना है, क्योंकि वो लिंक्डइन वगैरह भी नहीं पता था। 2019-2020 का मैं बीटेक क्वालिफाई हूँ, और तब मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से बुक है। बस ये देखते देखते बाद में पता चला कि पीके नाग में तो सब कुछ जो सिलेबस में दिया है, तो पीके नाग ही रेफर्ड, उसमें जो समझ नहीं आता था बाहर जगह से, वहां से हमने रेफर कर लिया। और अटेम्प्ट के नाम पे मैंने पूरा सिलेबस खत्म करके आई स्टार्टेड विद प्रीवियस पेपर, और यू विल बी सरप्राइज, मेरे को 12 मार्क्स मिले थे, 12 या मतलब 20 के करीब में कुछ मार्क्स मिले थे मेरे पहले पेपर में। 2000 मतलब मुझे लगता है 2018 या 19, क्योंकि 2020 में प्रिपेयर कर रहा था, मैं दे रहा था, और लिटरली वोंट बिलीव, मुझे लगता था मैं 50 मार्क्स तो लेकर आऊंगा, मुझे सब कुछ आता है। और देन उस टाइम ऐसे इतना बुरा फील हुआ, मतलब बहुत कम टाइम था मेरे पास, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा, मेरे तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम। तब मैंने थोड़ा मुझे लगता है कि हर पेपर में 4 मार्क्स 5 मार्क्स इंप्रूव हुआ। और ऐसा भी नहीं होता था कि इंप्रूव होता जा रहा था कि पूरा अपवर्ड जर्नी है कि यार e⁻x चल रहा है, कभी e⁻x भी हो गया। मतलब किसी पेपर में ऐसा हो गया कि यार मतलब मैं किसी पेपर में 26 या 36 मार्क्स लेकर, किसी में आ गया 25। तो अब 2015 वाले में मेरे को हो सकता है 25 आ गया, मार्क्स 2016 में मेरे को आ गया चलो 45, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ऐसा कॉन्स्टेंटली बढ़ता भी नहीं था। सो मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेपर्स दैट यू अटेम्प्ट, यू विल हैव आइडिया यार नहीं, ये तो बहुत अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट इट बी हैव प्रैक्टिस 10 और 20 पेपर्स, तब ये कांस्टेंट हो जाता है, तब आप थोड़ी इंप्रूव करने लगते हो। आप गलतियां बहुत नहीं करते, क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां जो कॉमन थी, एवरी टाइम इट वाज हैपनिंग, यू हैव स्टॉप दैट। तो मुझे लगता है कि ये जो आयुष ने बताया, मॉक्स ऑलवेज हेल्प,
आप यूपीएससी का पेपर ले लो, आप पीसीएस का ले लो, आप स्टेट पीएससी ले लो, किसी भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लो, नीट ले लो, जेई ले लो, एवरी टाइम इट इज प्रैक्टिस इज मस्ट, मॉक पेपर्स देना ही है। तो पहले से जब भी आप कोर्स स्टार्ट करो, हम हर 15 दिनों पर, एक हफ्ते में अभी भी मॉक्स स्टार्ट है अपने एग्रीविजन में। So coming to next, Melvin, we are sort of, you guys are from South India. It's very much, it's not well connected, right? हम लोग अभी नॉर्थ, मतलब महाराष्ट्र, केरला, कुछ पर्टिकुलर रीजन में वी आर वेरी एक्टिव. दिस एग्रीविजन इज तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, जैसे सनी है एंड यू वर देयर, और चाहे आंध्र प्रदेश वाला पर्टिकुलर रीजन, वी आर नॉट सो मच connected and we are very new, so people also don't know. When you identified us, I mean, you were preparing, this question is for Sunny and Melvin, both you can answer alternatively. कि जब आप लोगों को पता चला, how guys were, sort of saw the improvement in yourself while attempting the paper, while getting the competition and joining the group of Agrivision, and feeling sort of, you are getting all the queries next to next. जो भी queries हो रहा था, Saptadeep was there and other fellow team mentors were there. They were clarifying, clearing all the questions at once. How guys felt and what the improvement that you guys felt? I would like to go with Melvin first, then Sunny. Audible. So, good evening, everyone. First of all, actually, thank you for having me here today. It's a pleasure to connect with you all. So, I'll just share my experience. So, during my masters, actually, I did not concentrate much on my studies because college institutions push students towards IT placement. So, I was into IT training, all those things, and later I joined a startup company, and I started. So I worked there for almost 6 months. Then I decided to do masters. So at that point of time, actually, as you said, actually, I'm not aware about all the competitive exams that are there, and what to do after my bachelor's. I'm not so aware about all the things. So I gained few knowledges from my professors and all those things. So the best way to do a master's is through GATE. So that actually so then I realized that I need to prepare for my GATE exams. So I started preparing on my own. I got a ton of doubts. I don't know where to start with. I don't know the head part of the subject and the tail part of the subject, and so I got a ton of doubts. So at that time, actually, I realized that I need some help. So I came to know about Agrivision for You. So I joined. The main thing that impressed me a lot is the fundamentals. Actually, as I mentioned earlier, I'm not so into the academics. So I was into IT. So I need to learn fundamentals first. So Agrivision for You actually helped me to learn fundamentals first. Whenever a mentor is taking a class, they used to cover the fundamentals first. They give importance more to the basic part. Then they'll cover the complex and difficult part later. So that one actually really helped me a lot. So as you said, actually, about the mentors, actually, I would like to mention, as I'm from South India, actually, I was really worried about the language barrier. So I was thinking whether they could understand what I'm trying to say, and whether I can understand what they're trying to say. So this language barrier actually, it made me to think more than twice. So then I just blindly joined. Then really actually, whenever I didn't understand something, I used to ask them again, and they kindly actually they replied me. They clarified my doubt, and most of the lectures was in English, so I didn't have any problem with the lecturers. And the thing about the Saptadeep, actually, he helped me. Actually, he personally actually called me, and he used to clarify my doubts. So I'm very glad that I came to know about the mentors of the
aggravation for you. They actually personally they used to text me, and they used to clarify my doubts. So these things actually help me to build my confidence. And as I said, actually I think Ayush actually mentioned about earliest preparation. So I would actually advise the future aspirants to start early as possible, because I was as I mentioned, I joined late the last minute, so I wasn't able to prepare much. But still, actually, aggravation for you helped me a lot. So my suggestion is to start your preparation as soon as possible, so you can get a better score. That's all from my end. Good. Thank you, Melvin. If I'll summarize yours point, it's a better earlier start, and you'll get better results also. Sunny, you please, अब बताओ. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन. सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ खास रहा नहीं है एकेडमिक्स में, वैसे भी तो कुछ खास किया नहीं था आज तक वैसे. और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह के लिए. तो फिर उसमें मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर मैंने मेरे क्लासमेट्स ने मुझे सजेस्ट किया था गेट के लिए. उन्होंने बताया कि एग्रीविजन करके कोचिंग है, उसके लिए जा सकते हो. फिर मैंने सर आप मैम से बात की थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई कि इसमें ये है वगैरह वगैरह है, तुम्हारी इसमें हेल्प हो जाएगी. और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था उसमें. फिर आपसे भी मेरी बात हुई थी, फिर आपने भी कहा कि हाँ तुम कर लोगे ये वगैरह, इसमें हेल्प की थी वगैरह. बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई थी उसके अंदर के लिए. और मैं लास्ट 3 मंथ में स्टार्ट किया था. यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया. फिर लकीली मुझे ये कॉलेज मिल गया. बट तो लास्ट में 3 महीने थे, तो मैंने टेस्ट भी प्रॉपर नहीं दे पाया था. कुछ फैमिली इश्यूज भी थे, तो मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया. बट मुझे मिल गया. और आपके सब और जो टेस्ट भी देता था, तो बहुत सारी मिस्टेक मुझसे हो जाती थी, उसमें इम्प्रूवमेंट किया धीरे धीरे करके. और जो भी था मतलब जो डाउट्स रहते थे, हम अगर उस ग्रुप में पोस्ट करते थे, उसका इमीडिएटली कुछ टाइम के अंदर सॉल्यूशन मिल जाता था, एक्सप्लेनेशन मिल जाता था. तो पर्सनल डाउट भी हमारे सोल्व किए जाते थे. तो ये रहा. और सर तो मैम ने लास्ट में इंजीनियरिंग फूड इंजीनियरिंग क्लासेस ली थी, वो बहुत हेल्पफुल थी. गुड, थैंक यू सनी. विधि, क्या लगता है आपको सबसे जस्ट लास्ट लाइनर्स विथ एवरीवन, जस्ट थिंक अबाउट दैट एवरीवन. सब लोग अपने अपने एक लाइन बोलोगे जो मुझे आप लोग के अकॉर्डिंग द बेस्ट लाइन हो सकती है. आप लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ, दैट टिल द टाइम आई विल डिस्कस अदर मैटर्स एंड अदर क्वेश्चंस. आई विल टेक इट. स्नेहा इज द लास्ट स्टूडेंट पैनल मेंबर. स्नेहा, आप कुफो से हो एज फार एज आई नो, और वहाँ के लोग बहुत सारे हर बार गेट देते रहे. What do you think that how AgriVision has helped the students, and also how was your journey different from others? क्योंकि सबकी अलग अलग जर्नी होती है, अलग अलग कॉलेज होता है, सबके कॉन्सेप्ट्स होते हैं. So please. Hi, my name is Neha. So my journey was actually like same, but it was a bit different because I started the preparation at the last of November. So I hardly had 2.5 months for preparation. So it was very difficult to cover all the topics at that short span of time. So strategizing is one important thing, because I strategize like I skipped studying chemistry because that is not at all good, but I don't have time at that time. So I skipped chemistry and concentrated on food technology and microbiology. Then I started studying with the recorded classes of AgriVision, and it helped me really well because I don't have even one note from my college days. Everything was that COVID time and all, so there was no notes, and I solely I depends on AgriVision's note and from the syllabus. So I covered one by one, and if the topic is too difficult for me, I will just skip it. And if it's if I'm very good at that topic, like some topics are okay, better for that's okay for me. So I cover the topic. And another thing is mocks. Mocks is the best way to analyze ourselves and to improve ourselves. So I had given 90 to 95% of the mocks that was available in my portal. So it helped me to improve. Like Raju sir had said, not in every single mock we don't get that better mark. Sometimes it will be good mark, sometimes it will be really bad mark.
so we will get demotivated. But go for the mocks, write the mocks every time. So giving the mocks only will help us to analyze ourselves and build our confidence. And also we can like thorough our subject knowledge also. If we are not good at one subject, then we can revise it again. So it will help us to build our subject knowledge also. And mocks are a really important, was really important in our journey of study. And aggregation had helped me a lot because at this time, if I had any doubt, they will clear the doubt. And the prior day of examination, there was a mentoring section by aggregation team. It helped a lot to be cool at the time of examinations. And so my final grade was also just like a mock. And confident at that time because of the mocks and the mentoring. So thank you, aggregation, for the help. Thank you so much, everyone. The appreciation a little bit, it helps also to boost us to bring something new and to work hard and to bring something better for everyone. Ankita, I have one question for you. One of our students have asked that how to complete the whole syllabus and how many hours to be given on daily basis, and how to manage GATE preparation along with internship. मतलब that student is currently in the internship program, and तभी वो, I think Ankita is on hold. Saptadeep, I think you can take up this question. So the question is, one of the students has asked that he or she is doing internship right now, and how can she manage time during the internship for GATE preparation, and how many hours should she devote on the daily basis? So मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं भी जब गेट का एग्जाम्स था उसके 1-1.5 महीने पहले मैं भी इंटर्नशिप में था, और आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर ऑल आर फ्रॉम फूड टेक और फूड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. But being a dairy tech guy, it's very tough to like formulate and study everything. My bachelor's is from dairy technology. So in the first semester or in the first year, I thought कि मैं NDRI करनाल जाऊँगा chemistry. फिर second year में I thought कि मैं microbiology में जाऊँगा. थर्ड ईयर में जाके थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग पढ़ने लगा तो आई थॉट कि मैं इंजीनियरिंग में करूँ. फिर उसके बाद जब हमारा एक सेमेस्टर था, उस सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट था फूड केमिस्ट्री के एंड फूड इंजीनियरिंग पे. उसके बाद मैंने सोचा कि गेट दे देता हूँ, गेट के लिए तैयारी करता हूँ. उस टाइम पे लाइक ऑन अराउंड 2021 सितंबर अक्टूबर आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. एंड एट दैट टाइम कि मैंने एवरी डे 16 to 17 आवर पढ़ता था. ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, लाइक it's a very huge syllabus and I don't know nothing about food techs and all, just doing very basics. So मैं उस टाइम पे कोविड था तो मैं 16 से 17 घंटा विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी चीट एवरी डे पढ़ता था, इंक्लूडिंग प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट. मैं सुबह उठता था, पढ़ने बैठ जाता था, फिर 10-15 मिनट कुछ खा लिया, फिर से बैठ गया. लाइक मिनिमम ऑफ 15 आवर्स में एवरी डे पढ़ता था. फिर उसके बाद मैं गया इंटर्नशिप पे ऑन द मंथ ऑफ जैन. अब जनवरी में मेरे इंटर्नशिप का जो आवर्स था इट इज फ्रॉम 9 to 6. तो मैं सुबह उठ जाता था ऑन एंड अराउंड 4:30 AM to 5. 4:30 AM to 5 उठ जाता था, उससे लेके 9 बजे तक पढ़ लिया. फिर उसके बाद 9 से 6 बजे तक मैं सोच लेता था दिमाग में कि आज जाके कुछ भी फ्री टाइम मिल जाएगा तो मैं कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लूंगा, कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर लूंगा. तो इस हिसाब से मैं नोट्स वगैरह बैग में भर के लेके जाता था. तो जब भी फ्री टाइम मिल जाता था मैं एक छोटा सा जगह देख लिया था अपने लिए कि कोई यहाँ पे डिस्टर्ब मेरे को करने नहीं आया, कि टिफिन टाइम हो गया या फिर प्रोसेस चल रहा है. मैं डेयरी प्रोडक्शन में था, मदर डेयरी पे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है तो मैं उस जगह पे चला जाता था ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरे पास. तो जितना भी शॉर्ट टाइम मिल जाता था मैं हर एक टाइम को यूटिलाइज करता था. एंड 6 बजे के बाद आके मैं 6 to 6:30 रेस्ट करके फ्रॉम 6:30 to अराउंड 10 तक मैं पढ़ लेता था. फिर थोड़ा बहुत खा के फिर फ्रॉम 10 to 1:30 में पढ़ता था. मैं 2 या 2.5 घंटा सोता था. लाइक ऐसा मेरा रूटीन था. बट मेरे को लगता है कि इफ यू आर started your preparation, you guys have started your preparation from the early stage, and if your background is not food tech, then you should devote a minimum of 10 to 12 hours a day. And if you are from food tech background and you are in internship, so internship में as such कुछ खास होता तो नहीं है. सब बोलते हैं कि दिस इज वेरी टफ एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है. 1 महीना लगता है सब कुछ अडॉप्ट करने के लिए. फर्स्ट 1 month you will take to adapt everything.
उसके बाद तुम्हारे उधर कुछ दोस्त बन जाएंगे, वर्कर्स से अच्छे बॉन्डिंग्स हो जाएंगे। तो जब भी फ्री टाइम मिले हर एक टाइम को यूटिलाइज करो एंड जस्ट डू योर बेस्ट। एंड क्या करो कि कुछ भी जब तुम टॉपिक्स पढ़ रहे हो, लाइक मान लो कि यू आर प्रिपेयरिंग सम टॉपिक अराउंड फूड केमिस्ट्री लाइक मेलियट ब्राउनिंग रिएक्शन, अब क्या काम करो कि पहले ही तुम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लो। अब मेलियट ब्राउनिंग जब भी तुम कर रहे हो कि तुमने पढ़ लिया मेलियट ब्राउनिंग रिएक्शन, व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेलियट ब्राउनिंग रिएक्शन, यू गाइस गो थ्रू द केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल, जस्ट क्वेश्चंस देखो कि इस रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस आया है और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये अपने दिमाग में सोच लो कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अगर मैं पैनलिस्ट बनता, अगर मैं आईआईटी मतलब जो पेपर सेट करता तो मैं कैसे क्वेश्चन देता, मैं तो आसान क्वेश्चन नहीं देता, मैं टफ पेपर ही सेट करता। तो उस हिसाब से अपने दिमाग में कुछ टफ क्वेश्चन सोचो, कुछ प्रीवियस ईयर्स दे दो, कुछ देख लो ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक को तुम लोग ऐसे रिवाइज करो कि फर्स्ट टाइम में ही तुम लोग ऐसे रिवाइज कर लो कि नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो अरे ये तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन आ जाए। और वो आवर्स के तो मिनिमम देखो, तुम अगर इंटर्नशिप में हो तो मिनिमम भी तुम्हें 7 से 8 आवर्स तो विदाउट एनी फेल करना ही होगा, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है और इट्स टफ टू गेट एवरीथिंग। लाइक अगर तुम दिन का 3-4 घंटा पढ़ रहे हो तो इट्स नॉट इनफ फॉर 4 सब्जेक्ट्स। एंड ऐसा सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ोगे तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर प्रिपरेशन, डेफिनेटली, बिकॉज दीस आर 4 डिफरेंट डायमेंशनल सब्जेक्ट। केमिस्ट्री जिसके साथ कुछ रिलेट नहीं है फूड के, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा थोड़ा है बट फिर भी तुम्हें देखना होगा, बायोकेमिस्ट्री मान लो या फिर जनरल एप्टीट्यूड, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना ही होगा। एंड फॉर एक्सी तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सी। और तुमने गलती से मैं क्या ही बोलूं, अगर तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स ले लिया, जैसे मैं ले लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि मैं बीटेक में थोड़ा बहुत पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स, बट फ्लूइड इज फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम थर्मो लेते हो एंड तुम्हारे बीटेक में जो थर्मो तुमने पढ़ा है तुम एक्चुअली वो रिलेट कर पाओगे। एंड तुम थर्मो अगर बहुत अच्छे से पढ़ लो तुम बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। लाइक मैं लिख के दे सकता हूँ, यू विल स्कोर अराउंड 25 to 30 अगर तुम अच्छे से कर लो। बट फ्लूइड में क्या हो जाएगा, अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स कितना भी पढ़ लो विल नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड के सिलेबस ही इतना वास्ट है और इतना बड़ा है और बीटेक में इतना कुछ पढ़ाते भी नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द, मेरे कॉलेज में तो नहीं था, अब तुम्हारे तो पता नहीं तुम लोगों के, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये सब कवर नहीं करते। तो इट्स एक्चुअली टफ टू गेट एवरी कंसेप्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड देखो फ्लूइड के हम लोग फूड टेक से है या तो डेयरी टेक से है, इस बैकग्राउंड में हमारा उतना एक्सपर्टीज नहीं है कि हम लोग खुद से सोचे कि फूड के मतलब फ्लूइड के इतना ऐसा डिफिकल्टी लेवल आ सकता है। तो उस हिसाब से देख लो कि कौन सा तुम्हें इंटरेस्ट लगे। एंड प्लीज माय रिकमेंडेशन वुड बी, इफ you are preparing really for XC and if you have little bit of interest of thermo, then please go for the thermodynamics, because अगर तुम fluid में score करते हो 50 तो for sure अगर तुम thermo में वही same मेहनत दे दोगे you will definitely score around 60 plus 65 plus definitely। और आवाज के लिए तो 7 से 8 घंटा 10 घंटा भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इस 6 महीना नहीं सोओगे या फिर रेस्ट ढंग से नहीं करोगे, कुछ मैटर नहीं करेगा। जस्ट डू योर बेस्ट, जितना भी टाइम तुम्हें देना है दैट इज टोटली अप टू योर हैंड। एंड जस्ट प्लीज कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाना कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है या फिर मॉक टेस्ट में तुम्हें अच्छा नंबर नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं होता है, जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। एंड प्लीज दिमाग में रख लेना कि आई नीड टू डू दिस एंड आई हैव टू डू दिस। Definitely you will get a very good mark as well as a very good score. I hope it's clear. वेरी ट्रू सप्तदीप। 6 महीना साल भर नहीं भी सोएंगे, 2 घंटा 3 घंटा सोएंगे तो कुछ होगा कुछ नहीं। नहीं होगा। अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, अच्छा प्लेसमेंट ले लेंगे, दैट वुड बी लाइफ लॉन्ग। तो वेरी ट्रू। एक क्वेश्चन और है जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा। Just excuse me, I'm so sorry, I was just off for because of network problem. I'm not at a place, so I just would complete my sentence and was just requesting to my fellow mates, these students who has got into the college, whenever you get something new that we can do for the community of agriculture and food technology and allied background, please let us know, give your feedback
and be connected with us, of course, all the time. Okay. And ma'am, if you have any questions, I guess we have taken all the doubts and we have connected to the in all this mentors and students panels, and that makes a lot of queries to already been solved. And generally, major thing that crux what I got with the conversation of this Melvin, Sunny, Vidhi, and Ayush, Saunak, and it's like marks are very much important. Second, early start is very much important. Planned, in a case of Sonic told that you have to plan each and everything. That's very much important, of course. And I gave one thing to everyone, that one line that you have to spoke at the end of the session. Please be ready with that. I guess, yeah, and ma'am would like to take forward it. Yeah, please. Yes, sir. Everyone can start off with their one-liners. One by one, you can So, start. no, Saptadeep would like to go first. Saptadeep, what's the one line, base line that would like to give to the students? And this is the very perfect time to start. That was our title actually. Shall we start now or what? So June, because after a month you'll be getting your forms out and you'll have to fill the forms, and then you'll have to be very much since you'll be involved in your fourth year other things, and also Saptadeep, the last line, one line. सिर्फ गेट खोलना नहीं है, गेट को फोड़ना है. Oh, that's good. Ayush. Yes, so start early, make your own notes, and give mock tests. Sunny. Yeah, go on. It's right time to start your preparation. You get late and late, but not go your preparation. You won't get that what you want. So it's right time to start your preparation. Okay. Vidhi. So give more and more mock tests, and not only the mock test but the wrong questions, please check them, because in the next mock test we get that same question and I have done it wrong again. So please revise the wrong question. It's very important, very very important. Correct. We don't consider that. Correct. Sneha. One line. Strategies according to your capability, and give the best in every mock test, and while you are studying, and success will be yours. Great. Melvin, one liner on success line. I would say mock tests are more important than your college CA exams. That's good. Sana, one success line or success mantra. I would only like to say that practice and persevere, and this is the moment. No moment is waiting for you. This is the moment. You have to start right now and nothing else. Great, thank you guys. So I'd like to request to Sai sir and Ankita ma'am, if they are there, just with one liners they would like to motivate. Yeah, right. If you are at this point of time, coming to this webinar, I think you are 50% prepared for attending the classes. So you register for the classes, we are there to help you. And one thing that I wanted to point out is consistency. This is the key for any person to achieve a very good grade score. Be consistent throughout this timeline. All right. Thank you, sir. Ankita ma'am, if you're there. All right, I don't know. I can't see. So from on behalf of me, one line would be the Agrivision for you is the best platform for a GATE XCXL. Come on, we are ready to help you day and night, 24 hours. And whatever you need, you can share with us anything. And of course, you can come. And this is just a beginning. We'll be taking regular sessions with one by one with Saptadeep, Vidhi ma'am, or there would be a ma'am or sir, because they'll be also connected with us once you are started getting mentorship. And since I'll be senior and they'll have to carry forward this platform, what the purpose that we made. And yeah, and whoever have any query, please connect us for a personal call, one-to-one call, and you can ask your queries. As this Ayush, Melvin, Sonak, and Sneha, Bidhi, Sunny, whatever they told that how they clarified their doubts in beginning of the session, also when they were taking their admissions with Agrivision.
So of course we are going to help each and everyone. And yeah, so I guess, ma'am, we can wind this session now. And if you can see this, we are having this poster for GATE XCXL live lecture, recorded session, study material, more than 100 plus external tests. And I would say one thing: if you are able to do this third, fourth, and fifth point, 100 plus external test, 10 plus full length test, and 10 plus previous year papers. If you're really doing and you're solving all the queries, everything, I can take a guarantee that you can score more than 60 plus, and rest is totally depends on your performance and other things. And DSLR, that all the it is given by mentors for the mocks as an topic wise mocks, and short notes of course helps in the last moment. So we are giving each and everything whatever that is their need. And also we are coming with, in couple of months we are coming with our application and also a good website. We are going to make your journey more and more simpler with tech and our mentorship and other innovations. So be connected with us and we are going to help you all. So we have already announced that whoever has joined this session, they'll be getting that scholarship of 25%. And also all the mentors and our fellow mates, students, whoever is coming with your reference also will be giving the flat discount on your recommendation. Okay, so you can give a recommendation and you can give if you have a good experience, you can share us. If you have a bad experience also, you can share us. We won't tell you anything. We would be appreciating your each and everything. Let it be bad or good, we try to improve for the next upcoming days. Okay, so with this I would take a pause and would like to give thank you to all for joining. Although I'm not going good with last couple of months, we have excellent and you guys have been supporting us. Thank you so much for everything. Okay, good luck.